topic we are going to discuss about is transition elements. And the subtopic is general characteristics of transition elements. The next property is covalent radii and ionic radii. Covalent radii is a measure of the size of an atom that forms part of one covalent bond. And ionic radius is a measure of the size of a monoatomic ion in an ionic crystal structure. Let's discuss its trend in periodic table. Covalent radii decreases rapidly at the start of the series, then becomes almost constant and finally begin to increase at the end of the series. ये opposite है as compared to binding energies and melting and boiling points. वो पहले increase हो रहे थे series के start में और फिर series के end तक वो decrease हो रहे थे, लेकिन ये जो हैं ये decrease हो रहे हैं at the start of the series, फिर constant हो जाते हैं and then towards the end of the series इनका जो size है वो increase होना शुरू हो जाता है. The reason is the filled 3d orbitals have contracted into the electronic core and so shield the outer 4s electrons more effectively from the nucleus. Okay, जो first series होती है, जो start के elements हैं, उनमें चूंकि partially filled d orbitals होते हैं, न्यूक्लियस जो outermost electron पे force exert करता है, वो बहुत effective होती है, जिसकी वजह से shells contract कर जाएंगे और जो एटम का साइज है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ द सीरीज क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, सो जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है आउटर मोस्ट शेल पे वो उसको शील्ड कर लेते हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती. शेल चूंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो साइज होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड द एंड ऑफ द सीरीज. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी सीरीज के स्टार्ट में जो है वो ज्यादा है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हुआ है, फिर यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया क्रोमियम मैग्नीज और आयरन, और फिर ये दोबारा से क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया. And changes in the ionic radii along the series are much less regular, so that periodic trends in the properties of these ions are difficult to rationalize. So if we talk about the ionic radius, तो कोई एक specific pattern नहीं होता, हम उसको rationalize नहीं कर पाते, so एक irregular सा pattern बनता है, non specific pattern होता है. Here we have a practice MCQ. Increase in the radius of covalent radii towards the end of the series is due to, and the options are shielding effect, electron affinity, ionization energy, electronegativity, and the correct option is shielding effect. The next property is paramagnetism. Substances which are weakly attracted by a strong magnetic field are called paramagnetic substances, and those substances which are weakly repelled by a strong magnetic field are called diamagnetic substances. वो substances जो attract होते हैं towards strong magnetic field उन्हें हम paramagnetic substances कहते हैं, और वो substances जो repel होते हैं by the strong magnetic field उन्हें हम diamagnetic substances कहते हैं. Paramagnetic behavior is caused by the presence of unpaired electrons in an atom, molecule or ion associated with the spinning electron. Basically spin motion की वजह से paramagnetic behavior produce होता है. अगर तो paired electrons हैं तो वो एक दूसरे के movement को cancel करके diamagnetic हो जाएंगे, लेकिन अगर वो unpaired electrons हैं तो उन सब का जो individual movement है वो add up होके paramagnetism को contribute करता है. So that's why it increases with increase in the number of unpaired electrons. जितने ज़्यादा unpaired electrons बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा एक substance वो paramagnetic होता जाएगा. So how substances become diamagnetic? And the answer lies in the fact when the electrons are paired in an orbital, the magnetic moments are cancelled out and the substance become डायमैग्नेटिक. क्योंकि एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, उन दोनों का जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. दैट्स वाई वो सब्सटेंस जो है वो डायमैग्नेटिक की तरफ जाएगा.
Let's see its trend in periodic table. The paramagnetic behavior is the strongest for Fe3 positive and Mn2 positive. And the reason is they have maximum number of unpaired electrons. These subshells, they are 5 in number, and both these elements have 5 unpaired electrons. So maximum unpaired electrons होने की वजह से they have the strongest paramagnetic behavior among all the other members of the series. Hence decreases on both sides of the first transition series. जैसे ही हम लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करेंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज होता जाता है. द रीजन इज कि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. द रीजन इज दैट बोथ Mn and Fe3 positive have 5 unpaired electrons each. That is the maximum number of unpaired electrons. The number of unpaired electrons decreases gradually to 0 on both sides. Here we have another MCQ. Paramagnetic character is due to valence electrons, paired electrons, unpaired electrons, all of these. And the correct option is unpaired electrons. One of the properties of transition elements is oxidation state. Transition elements exhibit variable valency or oxidation state. They show variable valencies because of the involvement of the unpaired d electrons in addition to s electrons in bond formation. चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं और उस वेरिएबल वैलेंसी की वजह अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ डी इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन states of variable number. All 3D series elements shows an oxidation state of +2 in oxidation to higher oxidation state. So most common oxidation state is +2 oxidation state. +2 oxidation state is shown when only 2s electrons are involved in bonding. जब सिर्फ 2s electrons involved होंगे, कोई d orbital involved नहीं होगा bonding में, तब they will show or exhibit +2 oxidation state. In highest oxidation states of first 5 elements, all s and d electrons are used for bonding. Highest oxidation states में उनके s orbitals भी involved हो रहे होते हैं और उनके d orbitals भी involved हो रहे होते हैं. So in this table you can see scandium shows +3 oxidation state क्योंकि इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है. टाइटेनियम shows +2 +3 +4. 4s में 2 है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में तो ये +2 शो करेगा. इसके साथ अगर एक 3d भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये +3 करेगा, और अगर 4s के साथ दोनों 3d भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा. वनेडियम +1 भी शो करता है, +2 +3 +4 +5. क्रोमियम भी +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6. सो मैंगनीज जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज +7. और जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्सेप्ट स्कैंडियम और टाइटेनियम बाकी सारे एलिमेंट्स शो कर रहे होते हैं. ठीक है, सो मैंगनीज तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इंक्रीज करती हैं और उसके बाद मैंगनीज के बाद फिर जो नंबर है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है. सो मैंगनीज में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 2 हैं और 3d में 5 हैं. सो अगर 4s इन्वॉल्व होंगे तो +2 होगा और उसके साथ अगर 3d भी सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये 2 + 5 = 7. So after manganese, the number of oxidation states decreases as the d subshells fill up and fewer unpaired electrons are available for bond formation. We have seen this fact in the previous table or slide. Let's discuss some questions. The oxidation state of manganese in MnO4 2 negative is, and the options are +7, -7, +6 or -6, and the correct option is +6.
Another question is stated as which of the following shows only +2 oxidation state? And the options are scandium, zinc, copper, cobalt. And the correct option is zinc. Because zinc के पास सिर्फ s ऑर्बिटल होता है जो कि पेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well and thank you so much.